Hello, hello, hello. Welcome to the stream. And we are back again in another stream. और आज हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस साल का वर्ल्ड कप एंड एड अप करते हैं. जस्ट चेकिंग एवरीथिंग इज ऑल राइट. यप यप यप. सो हियर वी गो. कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है. लॉन्ग वेट. बहुत टाइम से इंतजार था इस दिन का. हम सभी फुटबॉल फैंस को. और it's one day to go, and what would be a better time? Yeah. So we are getting some lag. Let me fix that. Yeah, I think we are good to start the predictions. Okay, so let us begin with the predictions. या आप भी जाके ब्रैकेट चैलेंज करके है, फीफा ब्रैकेट चैलेंज. आप भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन शो योर प्रेडिक्शंस एज. अगर आपकी टीम फाइनल तक नहीं जा रही है या फिर आपकी टीम नहीं जीत रही है, दैट इज नॉट लाइक it might happen that they win, but are we having a lag? So we are getting some lag. Okay, can I get something on the chat from the viewers we are having, because I'm not sure कि बाकी phones में work कर रहा है कि नहीं. Keeps on loading. Yep, I'm facing the same issue. Keeps on loading after every 1 sec. Yep. हाँ, frame drop दिखा रहे हैं यहाँ पे. हाँ, I think it is fine now. I hope it is. Yeah, it is fine now. शायद से. Okay, without further delay, let us start the predictions. वैसे ही बहुत देर कर चुके हैं हम, है ना. सो हियर वी हैव ग्रुप ए. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ. यप.
So here we have the group A. अगर हम इसमें देखें तो we have the world rankings of this country. Mexico being the top rated country in this group with a world ranking of 15. South Africa 60 पे है और Republic of Korea 25th rank पे है और Czech Republic if it's Czechia is on 41 if you can see it right there. Yes. So here we have them. Okay. So Mexico coming into this tournament has been one of the best teams और ऐसा हमेशा ही होता है कि जो होस्ट टीम है इन द वर्ल्ड कप दे शो अप ऑफ कोर्स लास्ट टाइम कतर के साथ वो नहीं हुआ था इवन आफ्टर दे वर द एएफसी एशियन चैंपियंस बट आई थिंक दिस टाइम out of all the three host nations I think Mexico is someone who will be going forward the max so for me इस ग्रुप को टॉप कर रही है Mexico. Then we have it's tricky between South Africa and Korea, but I think the experience that Korea brings is more. But वहीं पर सिमिलरली मैं बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका जैसे कंडीशंस में खेलने की हालत उनके पास है दे विल फेस सिमिलर कंडीशंस इन नॉर्थ अमेरिका सो दे हैव ए अपर हैंड इन दैट आई थिंक इस फिक्सचर का जो विनर होगा दैट विल बी लीडिंग दैट विल बी सेकंड प्लेस इन दिस ग्रुप फॉर मी आई थिंक साउथ कोरिया इस टाइम पे उनके पास ज्यादा टैलेंट है ज्यादा प्लेयर्स है जो टॉप लीग में खेल रहे हैं आई थिंक फॉर दैट रीजन कोरिया मेरे लिए सेकंड में होगा एंड साउथ अफ्रीका चेक रिपब्लिक मुझे नहीं लगता कि चेक रिपब्लिक अभी के टाइम पे एक ऐसी टीम है जो बीट कर पाएगी साउथ अफ्रीका को बट फिर भी ऑल्दो साउथ अफ्रीका एक लोअर रैंक टीम है but I think South Africa in these conditions will be very good. For me, South Africa is on third and Czechia will be on fourth. Moving forward to Group B, Canada, Bosnia, Qatar, and Switzerland. Do I think the same of Canada as I thought of Mexico? Honestly, no. World rankings में अगर हम देखें तो Canada is the second comes in world ranking. Switzerland being the top, Qatar and Bosnia. So I think JC rankings इनकी इसमें है मुझे लगता है similar rankings होगी but I think Qatar will rank over Canada in this group. This might be a disappointment for Canadian fans जो host कर रहे हैं इस साल but I think this is gonna happen because Alphonso Davies उन लोगों का top player है and he has been injured throughout the season और I don't think they are good enough to beat this Qatar team जो जिनके पास बहुत अच्छे players हैं and with the academies they have brought in Qatar is a phenomenal team और लास्ट ईयर जैसे सऊदी अरेबिया ने शो किया था वर्ल्ड को कि दे एग्जिस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप आई थिंक दिस इज द ईयर ऑफ कतर ऑफ कोर्स लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने एक भी मैच शायद नहीं जीता था बट दिस ईयर आई थिंक दे आर गोइंग टू द राउंड ऑफ 32 देन नेक्स्ट वी हैव ग्रुप सी ब्राजील मोरक्को one of the most anticipated matches in this world cup हेटी एंड स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ऑफ कोर्स जो लोग बहुत साल बाद रिटर्न कर रहे हैं टू द वर्ल्ड कप लेट अस सी द वर्ल्ड रैंकिंग्स ब्राजील 6 मोरक्को 8 हेटी 83 स्कॉटलैंड 43 अब I don't think I have to tell much about Haiti in this bracket because they are surely going to be the fourth in this group but मुझे अगर चूज करना हो ब्राजील और मोरक्को में
I really think Morocco have an edge over Brazil and Scotland, of course, and Haiti will be placed fourth. अब बारी है ग्रुप डी की, जिसके लिए मुझे अपना कैमरा फिर से इस तरफ स्लाइड करना पड़ेगा. यप. And in Group D, we have USA, the hosts, Paraguay, Australia, and Turkey. So we have the world rankings of USA as 16, Paraguay at 40, Australia at 27, Turkey at 22. Now, the prodigy and young talent that Turkey, मैं तुर्की बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझको, तो टर्की बोलूंगा मैं. The prodigy that Turkey has is phenomenal. So for me, there is a chance कि टर्की इस ग्रुप को टॉप करे. But considering the fact that USA are playing as a host and USA are the you know क्या बोलते हैं, are उन लोगों को अपना कंडीशंस पता है उन लोगों के देश के. So for that reason only, I think USA comes, Turkey, then comes Australia, and we have Paraguay at last. Paraguay, of course, बहुत साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही है. So for me, they are not, you know, experienced तो है. They had been playing वर्ल्ड कप्स बिफोर, पर अभी के टाइम पे आई डोंट थिंक दे आर गुड इनफ टू बीट ऑस्ट्रेलिया, टर्की एंड यूएसए. So for me, they are on the fourth position. Moving forward, we have Group E, जिसके लिए मुझे फिर से इधर हटना पड़ेगा. Yep, yep, yep. So Group E, we have Germany, Curacao, कोस्ट वर्दे नहीं, आइवरी कोस्ट है ये, सॉरी, आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर. So this is one of the good teams. अगर आप one of the good groups that we are having. अगर आप कुरासाओ को छोड़ दो तो आइवरी कोस्ट लास्ट टू लास्ट कॉन्काकैफ के चैंपियंस, इक्वाडोर जो क्वालिफायर्स में बहुत अच्छी खेली थी, they were on the same bracket as Argentina and they played phenomenal. So this is a very good group, है ना. But जर्मनी जो पिछले कुछ वर्ल्ड कप से अच्छी नहीं खेल पा रही है, कैन दे ब्रेक द कर्स? कैन दे ब्रेक द कर्स इन दिस वर्ल्ड कप? आई डोंट थिंक सो. लाइक ऑफ कोर्स उनके पास अच्छे प्लेयर्स है, फ्लोरियन वर्ड्स, काई हैवर्ट्ज, मैनुअल नॉयर स्टिल प्लेइंग. आई डोंट नो इफ ही विल बी स्टार्टिंग और नॉट, बट मुझे लगता है एक अपसेट तो हमें इस ग्रुप में देखने को मिलेगा. फॉर मी, इक्वाडोर is topping this group. Then comes Germany, Ivory Coast, and Curacao. Might hurt many German fans, but I think मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होने वाला है. ग्रुप एफ की अगर बात करें, then we have Netherlands, Japan, Sweden and Tunisia. अब ग्रुप ई से भी आई थिंक ये ग्रुप एफ इज मोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेथ. नेदरलैंड्स सारी की सारी टीम टॉप 50 नेशंस में आती है, ट्यूनीशिया, स्वीडन, जापान एंड नेदरलैंड्स. अब as you know, Netherlands has been predicted to be the world champions this year by a mathematician और जो भी है वो, ठीक है ना. तो क्या आपको लगता है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस बन पाएंगे? फॉर मी इट्स हार्ड. अब देखो उनके पास एक अच्छा टीम है, बट आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, वर्ल्ड कप में जीत भी सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वी हैव बेटर टीम्स देन नेदरलैंड्स इन दिस वर्ल्ड कप. बट वर्ल्ड कप में कभी ये बात नहीं आती कि किसकी टीम कितनी बेटर है. 2022 में मोरक्को की टीम को कौन काउंट कर रहा था, है कि नहीं? सो आई थिंक
they might have a chance, or at least इस group में तो I see them topping this group, followed by Japan, followed by Sweden, Tunisia on fourth. I think this is hard on Tunisia, but I think they are Japan are going forward in this World Cup. They might be a dark horse. They might be a dark horse as well. इस साल कोई जापान को उतना काउंट नहीं कर रहा है, बट इट हैज बीन द केस विद जापान एवरी वर्ल्ड कप. कोई उन्हें काउंट नहीं करता है और वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देते हैं इन एवरी वर्ल्ड कप. आई थिंक दिस वर्ल्ड कप एज वेल, दे अगर सब कुछ सही रहा, अगर अच्छे ओपोनेंट्स मिले, मतलब दे कुड गो टू द क्वार्टर्स और सेमीज एज वेल. बोल्ड ओपिनियन है, बट मे बी दिस इज अ गुड चांस फॉर जापान. So moving forward, we have group G, जिसमें हमारे पास है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड. सो क्या लगता है कौन आगे जाएगा? आई मीन कौन टॉप करेगा ग्रुप को और कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आई थिंक बेल्जियम, जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं, केविन डी ब्रुयन, थिबो कोर्तुआ, उन लोगों का ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. Also in Egypt, we have Mo Salah playing his last World Cup. New Zealand, of course, we have Tim Payne, ऐसे ही कुछ नाम था शायद उनका. We have that. And Iran, I don't know. अगर boldly सोचो तो I think अगर boldly सोचो तो I think Egypt could top this group, but I don't think Belgium ही टॉप करना चाहिए इस ग्रुप को, followed by Egypt, New Zealand and Iran. So उसके बाद हमारे पास है ग्रुप H, जिसमें है स्पानिया, केपे वर्दे, सऊदी अरबिया एंड उरुग्वे. अब इसमें मुझे शायद ज्यादा बात करना भी नहीं चाहिए. स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरबिया एंड केप वर्दे. क्यों? बिकॉज स्पेन इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप, इफ नॉट द बेस्ट तो भी. एंड फॉर मी दे आर द बेस्ट. जिस तरीके की केमिस्ट्री है उनके पास, जिस तरीके की मिडफील्ड है, the type of profiles they are bringing in this World Cup, I think they are the best. उसके बाद उरुग्वे अगर हमारे पास आता है, so this is not the same उरुग्वे. और इसमें एक चीज वो भी हो सकती है कि सऊदी अरेबिया भी सेकंड हो सकती है. तो मे बी सऊदी अरेबिया विल कम सेकंड. बट नहीं, आई वुड ट्रस्ट उरुग्वे कि वो लोग सेकंड फिनिश करे, है ना. ये 4 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियंस, मजाक नहीं है. Then we have group I, which is possibly the group of death for many fans. We have France, who is currently ranked 1, who have world rankings of 1. Senegal, the AFCON champions. अगर भी उनसे हटा दिया गया तो मैं तो सेनेगल को ही मानता हूँ, बिकॉज मोरक्को के प्लेयर्स ने जो खींचातानी की थी गोलकीपर के साथ, आई डोंट थिंक they deserve to be the champions. So for me, Senegal is the champion. Then we have Iraq and Norway. Norway being the dark horse of this tournament. मुझे नहीं पता कितने आगे तक जाएंगे, but in the qualifiers they have beaten teams. They have beaten Italy to qualify for this World Cup. तो हम उन्हें छोटा नहीं आंक सकते, बट बहुत ज्यादा अटैक डिपेंडेंट टीम है. अगर जो फ्रांस वर्सेस नॉर्वे का मैचअप है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे फ्रांस के विंगर्स को वो रोक सकते हैं. एंड आई प्रेडिक्ट दैट मैच टू बी ए वेरी हाई स्कोरिंग वाला मैच. ऐसा मतलब 4-5, 5-2, 4-5, 4-3 वाला मैच हो सकता है वो. बट फॉर नाउ आई थिंक फ्रांस फ्रांस आर going at top as their world ranking, followed by Senegal, Norway, and Iraq.
दिस इज माई प्रिडिक्शंस बिकॉज सेनेगल को कोई अगर मतलब उतना काउंट भी नहीं कर रहा है, बट दे आर ए वेरी गुड टीम. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दे आर ए वेरी गुड टीम. Then we have Group J, our lovely Argentina, Algeria, Austria, and Jordan. आई थिंक अर्जेंटीना को इस ग्रुप को एक बहुत इजी ग्रुप तो नहीं, बट एक ठीक ठाक इजी ग्रुप मिला है अर्जेंटीना को. इट्स नॉट दैट टफ. बाकी कंट्रीज को टफर ग्रुप्स मिलिए. आई थिंक अल्जीरिया कुड बी ए टफ ओपोनेंट, और मे बी हम एक लूज भी देख सकते हैं इस ग्रुप स्टेज में. बट आई थिंक अर्जेंटीना विल इजीली बी ऑन टॉप, followed by Algeria, Austria, and Jordan. This is my predictions. Now we have Group K, जिसके लिए मुझे फिर से इस साइड जाना पड़ेगा. Yup. On Group A we have बड़े भैया की टीम पोर्टुगल और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उज्बेकिस्तान and Colombia. Colombia also a good team. Last कोपा अमेरिका में दे वर इन द फाइनल्स, और फाइनल्स में बहुत ही अच्छी कंपटीशन दी थी अर्जेंटीना को. सो आई थिंक पोर्टुगल वर्सेस कोलंबिया एक क्लोज मैच हो सकती है. मे बी कोलंबिया जीत भी सकती है उस मैच को, बट आई थिंक पोर्टुगल विल बी टॉपिंग देयर ग्रुप फॉलोड बाय कोलंबिया. एंड देन आई थिंक उज्बेकिस्तान विल नॉट शॉक इन दिस वर्ल्ड कप, बट एक अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड कर सकती है. बट कॉन्गो will be better, will give the better of Uzbekistan in this World Cup. Then we have Group L, the last group, the 12th group of the World Cup. England, Croatia, Ghana, Panama. Again, a pretty solid group, but I think Croatia will not be topping this group, but England will, followed by Croatia. अब घाना और पैनामा में I think Ghana will get better of Panama, and here we have all our groups, and हम बाद में देख लेंगे इसको. So we have to select the best third place teams. Mhm. Yeah, so हमें थर्ड प्लेस टीम्स को सिलेक्ट करना है. फॉर मी आई थिंक नॉर्वे, आइवरी कोस्ट आर श्योरली गोइंग. और उसके बाद हमें थोड़ा ये भी देखना है कि कौन से ग्रुप से कौन खेल रहा है. साउथ अफ्रीका, कनाडा, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग थ्रू. साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है शुड गो थ्रू. सऊदी अरेबिया ऑल्सो शुड गो थ्रू. सऊदी अरेबिया, Sweden should go through as well. Scotland should go through. Ghana should go through as well. We have Scotland, Canada, Austria. I think Austria and Australia will be going through. And the last spot out of all these teams depends on कौन गोल कम खा रहा है, और मुझे लग रहा है that team would be Canada. So this is our brackets. अब हमें knockouts pick करने हैं. Of course के लिए मैं फिर से yeah. So we are here on the knockout stages: round of 32, round of 16, quarterfinal, semi-final, final. So as we have 48 teams, पहले हमारे पास राउंड ऑफ 16 से स्टार्ट होता था. इस साल हम एक मैच ज्यादा देखने वाले हैं. मोर गेम्स, मोर फन, है ना? So and more money to FIFA as well. So we have the first round of 32 fixture as Ecuador
वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इक्वाडोर एक बहुत अच्छी टीम है and they will get the better of Australia as they go forward to the round of 16. France versus Sweden. I don't think I have to say anything about this. Korea and Qatar, though Asian teams, though Asian giants, facing in the round of 32 of the World Cup. मजा ही आ जाएगा. But I think Korea is a better team than Qatar. Netherlands and Brazil. This is also another beautiful fixture. बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक हो सकता है, but I don't see Netherlands going past Brazil. या फिर ना, लेट मी थिंक, दिस इज अ गुड फिक्सचर. ब्राजील के पास एक अच्छी मिडफील्ड तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. द मिडफील्ड नेदरलैंड इज ब्रिंगिंग इज बेटर. दे हैव गुड फुल बैक्स. नेदरलैंड्स बेंच स्ट्रॉन्ग है. ब्राजील के पास अच्छे विंगर्स हैं, ठीक है. डिफेंस इज अ क्वेश्चनेबल थिंग. ब्राजील एक्सपीरियंस पे काउंट कर रही है एंड नेदरलैंड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स देयर. दिस इज टफ मैन. नेदरलैंड्स और ब्राजील, I think the both of the teams deserve to be in the round of 16. But this is tough, yeah. Netherlands or Brazil. We have nobody on chat, so I cannot even ask. क्या लग रहा है chat? Who's gonna go past? Netherlands or Brazil? देखो, प्योर इंस्टिंक्ट बेस में बोल रहा हूँ, ब्राजील इज गोइंग, है ना. बट नेदरलैंड्स इज अ गुड टीम यार. On instincts, Brazil going through. Then we have Colombia versus Croatia. Croatia वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी खेलती है, बट कोलंबिया इज बेटर टीम. बट वर्ल्ड कप में बेटर टीम से नहीं, बल्कि इमोशंस, फैंस और स्टोरी लाइन से चलता है वर्ल्ड कप. क्रोएशिया इज गोइंग थ्रू. स्पेन वर्सेस अल्जीरिया, नो कंट्रोवर्सी. यूएसए कनाडा, दो होस्ट नेशंस. आई थिंक यूएसए इज गोइंग थ्रू. सियाटल में होएगा बेल्जियम वर्सेस सऊदी अरेबिया. बेल्जियम श्योरली गोइंग थ्रू. Morocco versus Japan. Now this is a tough fixture. Morocco versus Japan. Oof. As an Asian, सब एशियन के लिए जापान इज ऑलवेज द टीम विच यू सपोर्ट आउट ऑफ लव, है ना, लव फॉर द लव ऑफ द गेम. आप हमेशा जापान को सपोर्ट करते हो, बट मोरक्को इज अ फार 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 बेटर टीम, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. जर्मनी वर्सेस सेनेगल. बेचारी जर्मनी इतने सालों से नॉकआउट्स में आ नहीं रही है, एंड इफ दे फेस सेनेगल, it would be hard for Germany. It would be really hard for the Germans. Germany versus Senegal. What do you think? कौन जाएगा आगे? 30th June in the Dallas Stadium.
Senegal is a good team. Germany is also a good team. But I think Germany should go through in this matchup. Mexico versus Ivory Coast. Ivory Coast या फिर Mexico? I think Mexico. Mexico, yes, Mexico. England versus Norway. Whoa, whoa. England versus Norway. कौन जा रहा है आगे? England it is, I think, है ना? They have a better team, but Norway they are playing well. They have good attack, but their defense is horrible. बहुत ज़्यादा attack में वो लोग focus कर रहे हैं. And England have a good front three. Harry Kane will be there, so I think the Norway story will come to an end there. Argentina versus Uruguay, I think at least they need to win against Uruguay. I mean, they are the defending champions. So Turkey versus Egypt. Ah, Turkey versus Egypt. Turkey should go through Egypt. I think Turkey should go through. Switzerland versus Austria. Switzerland versus Austria. Switzerland versus Austria. I feel it is Austria. Portugal versus Ghana. Portugal, of course. Up next, we have the round of 16. Ecuador versus France. Ecuador being a very good team, but उनका पाला अगर फ्रांस से गिर रहा है तो France should go through. Korea versus Brazil. Now, again, जैसा प्रॉब्लम मुझे नेदरलैंड्स वर्सेस ब्राजील में आया था सेम प्रॉब्लम है. Korea is a good team, but I think Brazil it is. Croatia versus Spain. Croatia has been phenomenal in the last few World Cups, but they cannot get the better of Spain for sure. USA versus Belgium. USA जितनी भी अच्छी टीम है, बेल्जियम आगे जा रही है. मोरक्को वर्सेस जर्मनी. जर्मन्स का खेल यही खत्म होना चाहिए. मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड. इंग्लैंड इट इज. अर्जेंटीना वर्सेस टर्की. अच्छा गेम होना चाहिए, बट आई बिलीव इन अर्जेंटाइंस. And we have the D-Day with us. We have amazing quarterfinals as France versus Brazil, Spain versus Belgium, Morocco versus England, and the Judgment Day, Argentina versus Portugal. So, France versus Brazil, I feel Brazil it is. Because फ्रांस के लिए एक ही बात बोलूंगा, टू मच सॉल्ट स्पॉइल द फूड. आई थिंक ब्राजील कैसे जाएगी? ब्राजील पागल हो क्या? फ्रांस ही जा रही है. कैसी टीम बना के रखी है ब्राजील. हाँ, अच्छा टीम है ब्राजील का, बट फ्रांस का टीम देखा है? ब्राजील कुड नॉट गो थ्रू फ्रांस. स्पेन वर्सेस बेल्जियम, पागल हो क्या? मैं बेल्जियम क्लिक करूंगा. स्पेन इट इज. मोरक्को वर्सेस इंग्लैंड. मोरक्को वर्सेस इंग्लैंड. मोरक्को ने लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था, बट दिस वर्ल्ड कप इट इज द इंग्लैंड. इट्स कमिंग होम. यस इट इज. नाउ इसमें पता नहीं मैं क्या करूंगा. इसमें अर्जेंटीना वर्सेस पोर्टुगल. अगर ये ऑनेस्टली हो जाता है ना, अगर ये ऑनेस्टली हो जाता है, क्या ही मजा आ जाएगा. मतलब सोचो तुम कोई भी जीते नहीं, मतलब अगर कोई जीत जाए तो मतलब खत्म. फिर से वहां पर नया डिबेट शुरू हो जाएगा. बट क्या ही मैच होगा. अर्जेंटीना वर्सेस पोर्टुगल इन द क्वार्टर फाइनल्स. चलो ऑन पेपर अगर मैं देखूं तो पोर्टुगल इज थोड़ा सा एज मिलता है उनको अगेंस्ट अर्जेंटीना. सोलो इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं. बट व्हेन दिस अर्जेंटीनियन टीम प्लेज, दे आर अ डिफरेंट टीम. दे हैव अ डिफरेंट केमिस्ट्री. उनके सारे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री. बट आई थिंक वर्ल्ड कप चैंपियंस का एक कर्ज होता है हमेशा फीफा वर्ल्ड कप में. आई थिंक दे आर नॉट गोइंग थ्रू. इट इज
Cristiano Ronaldo's Portugal, who will be going through the semi-final, which I do not want, पर मुझे ऐसा लग रहा है with all the football knowledge I have, मुझे ऐसा लग रहा है कि Portugal will go to the semi-final, being better of Argentina. Now we have the semi-finals with us. France versus Spain. बहुत अच्छा मैच होने वाला है ये अगर हुआ तो. And I really think Spain are going to. Spain is a better team. उन्होंने नेशंस लीग में भी दिखाया फ्रांस को हरा के 4-3. But this time in the World Cup semi-finals, they will be the better of France again, and they will be on the final. Portugal versus England. Both teams are very good, पर मुझे लगता है Portugal should go to the final. And here we have the final. मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा. मेरे लिए पहले से Spain are the champions for the World Cup. And मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि Spain is going to pick this trophy. With all the players they have, with all the midfield they have, with all the defenders they have, Spain is the champion. No second thoughts. Portugal final में अगर honestly वो लोग final तक stretch करे तो this will be very heartbreaking for the Ronaldo fans, but I think Spain UEFA Nations League का replay देखने को मिल जाएगा हम लोगों को, but this time Spain will go ahead. सेव कर देता हूँ, पता नहीं कुछ लॉटरी वॉटरी लग गया था. Not now. Yep. So this is my predictions, guys, for the World Cup, and I think we'll be ending the stream very soon. इधर पर मैं तो यहाँ पर भी 50% was on Spain, and we had 33 को दिखाऊं कैसे मैं? We had 33% on Portugal. अर्जेंटीना में 0% था, और what is it? फ्रांस में 17% था. तो even in my poll, Spain is winning, and for me, yes, Spain is winning as well. So I don't know, कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, and this is the world's biggest event, of course. और मजा आएगा in the long run of 104 matches. Thank you everyone who have joined. We have had 4 likes. Thank you everyone. Subscribers बढ़े कि नहीं बढ़े मुझे नहीं पता. We have 12 subscribers, but hopefully till the end of the, and I love football. That's why I started this channel, purely on the basis of love of the game. And we will be soon streaming for the World Cups. Watch alongs आने वाले, and watch alongs, क्योंकि you won't be disappointed after watching those watch alongs with me. Games आप चला लोगे साइड में, and with me like to उसमें भी देखने को मिलेगा. The first game is also on दूरदर्शन. तो अगर आपके पास जी टीवी या फिर Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो you could watch the first game on DD Sports live 12:30 AM 12 June. अब तो फ्री भी कर दिया है. दूरदर्शन will be showing 4 quarterfinals, 2 semifinals and the final. So फर्स्ट मैच और ये सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे दूरदर्शन में. So